Hello students, this is Dr. Vibha Tiwari, Assistant Professor of English, Chaudhary Balluram Godara, Government Girls College, Sriganganagar. Students, in my previous video, I had taken up the figure of speech simile for discussion. So today I am going to discuss a few examples of that particular figure of speech so that you may be able to understand it well. As I told you earlier, that simile is that figure of speech that involves a comparison between two things. And the words that we use to introduce that comparison are as, like, and as and so. So, like here in this particular slide, I am giving you an example. If I say her smile is as bright as the sun, now there are two things which are being compared together. Her stands for a lady, that means a girl is being compared with sun. So let's have a look at the qualities of a girl. A girl, probably she might have blue eyes, she might be blonde, she might have bright smile. Similarly, if we talk about the sun is round, yellow, bright. These are the chief basic qualities of the two. Now, if we are comparing the two, what can be the common factor that may serve the basis of comparison? So that can be brightness. The girl or lady might have a bright smile, and the sun is, as we all know, is very bright. So we say her smile is as bright as the sun. Now we are comparing the smile of the girl with the sun, and the common factor between the two is brightness. And the words which are just introducing, which we have used to introduce this comparison, are as and as. Another example from this similar situation can be, her smile is bright like the sun. Now here same thing is being done. The girl is being compared to the sun, especially the smile of the girl is being compared with the sun, and the common factor between the two is brightness, and the word which has been used to introduce the comparison is like. So this is one of the examples of simile. I hope the thing is clear. The sun and the girl both are quite different from one another, but there is one common factor between the two, that is the brightness, and her smile, the smile of the girl, is being compared to the brightness of the sun. Another example, let's have one more example from the literature itself. It's a poem by Robert Burns, A Red, Red Rose. Oh, my love's like a red, red rose that's newly sprung in June. Here, an abstract notion called love is being compared with a rose, red rose. And what can be the common factor between the two? The second line gives us the basis of comparison. That's newly sprung in June. See, there is a flower, rose flower, which bloomed in June, and it is very fresh. So if somebody had just fallen in love, the love will appear fresh to him, or the beloved will appear fresh to him. So here the beloved is being compared with rose, and the common factor between the two is freshness. Another example, let's have one more example from prose. This I have taken from George Orwell's novel 1984, and this line has been taken from there. He sat as still as a mouse in the futile hope that whoever it was might go away after a single attempt. Now see, here a person is being compared with mouse. Now what is the common factor between the two? How can you compare a man with a mouse? If we go through this particular extract, then we come to know perhaps the man is hiding, and mouse is also known for hiding. So, and when it is hiding, it is very still, it remains quiet. Similarly, the man is also trying to be quiet. So the quietness of the two, or you can say the habit of hiding, has been compared here, and mouse and a person are being compared, and the word that has been used to introduce comparison, the words rather, is as. Still word has also been used here.
So this is one of the examples of use of simile in prose. Now let's have some common examples of simile. Slept like a log. Now a log of wood is being compared with perhaps with a person. If somebody is sleeping in a deep slumber, he lacks movement, just like a log of wood. It is also still, the log of wood also still, it doesn't move on its own. Similarly, the person who is in deep sleep doesn't move very often. So both the things have been compared together. Blind as a bat. We all know that bat is not able to see during daytime. It is perhaps blind during daytime. Similarly, if a person is not able to see something, it can be compared to a bat. He can be compared to a bat. Light as a feather, words like charm, old as the hills, pretty as a picture, strong as an ox, fight like cats and dogs. Now this is very common. Cat and dog, they are known for their you can say enmity, and we have often seen them fighting together. So if two persons or you can say two persons or anyone is fighting with someone else, that fight can be compared with cats and dogs. Sparkle like diamonds, cheeks like roses, sweet as sugar. If somebody is speaking, sometimes it is said that her voice is as sweet as sugar. Now sugar, we all know, is very sweet, and the voice is also, this sweetness can be the basis of comparison. So these are some of the common examples of simile. So on the whole, what I want to say is, if two distinct objects are compared together using like, as, or as and so, then there is simile. Let's have the whole thing in Hindi. तो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के बारे में, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनके माध्यम से हमें वो चीज़ और समझ में आ जाए। देखिए, सिमिली जो है वो कंपैरिजन है, दो चीज़ों में तुलना है, दो चीज़ों में, दो अलग अलग चीज़ों में, जिसके लिए हम एज या लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अब मैं प्रेजेंट उदाहरण की बात करूं तो आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में एक तरफ एक गर्ल की फ़ोटो है, दूसरी तरफ सन की। गर्ल की अगर हम बात करें तो उसके कॉमन फीचर्स हैं, ब्लू आइज़ हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं, उसके गोल्डन ब्राउन हेयर हैं, और उसकी स्माइल जो है वो ब्राइट सी है, मतलब बहुत खुश सी लग रही है। इसी तरह से सन की अगर हम बात करें तो राउंड येलो है और ब्राइट है। तो देखिए, स्माइल अगर हम दोनों, मतलब अगर स्माइल शब्द को हम यूज़ करें तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस स्माइल में भी है और ब्राइटनेस सन में भी है। तो मान लीजिए उदाहरण है, हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन, यानी उस लड़की की मुस्कुराहट सन जितनी चमकीली है। अब इसमें उदाहरण में देखिए, हर स्माइल यानी एक गर्ल को सन से कंपेयर किया गया है। जो कॉमन चीज़ दोनों में है वो है ब्राइट। इसकी स्माइल ब्राइट है, वो तो ब्राइट, सन तो ब्राइट होता ही है। और दोनों को कंपेयर करने के लिए जो लिंकिंग शब्द हैं वो है एज और एज। तो ये एक अच्छा उदाहरण है सिमिली का। इसी को अगर हम लाइक का इस्तेमाल करते हुए कहें तो ये होगा, हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन। यहाँ पर वापस उस गर्ल की मुस्कुराहट को सन से कंपेयर किया गया है, ब्राइटनेस को कंपेयर किया गया है, और जो कॉमन फैक्टर हुआ ब्राइटनेस, और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कंपैरिजन के लिए वो है लाइक। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं लिटरेचर से। रॉबर्ट बर्न्स की कविता है अ रेड रेड रोज़। इसमें पोइट ने अपने बिलवेड को रोज़ से कंपेयर किया है। कह रहा है, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़ दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। यानी बिलवेड को, उसकी प्रेमिका को उसने रेड रोज़ से कंपेयर किया है। और क्या आधार है कंपैरिजन का, वो हमें दूसरी लाइन से पता चलता है, दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। यानी जून के महीने में रोज़ का फ्लावर खिला है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा ताज़ा है, फ्रेश है। वैसे ही पोइट को अपनी बिलवेड फ्रेश नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रेशनेस कॉमन फैक्टर है बिलवेड में और रोज़ में। हालांकि रोज़ और ह्यूमन बीइंग का आपस में ऐसा कोई डायरेक्ट कह सकते हैं कि संबंध नहीं होता, लेकिन कॉमन फैक्टर अगर हम तलाशें तो फ्रेशनेस है दोनों में। तो इस वजह से लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोनों को कंपेयर करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है।
चलिए अब हम गद्य से एक उदाहरण देखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल राइटर हैं बहुत प्रसिद्ध, उनका एक नॉवल है 1984, उसकी एक लाइन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। He sat as still as a mouse in the futile hope that whoever it might go away after a single attempt. यहाँ कोई व्यक्ति है जो छिप के बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं कि he sat as still as a mouse। चूहे को व्यक्ति के साथ कंपेयर किया गया है और जो कॉमन फैक्टर है दोनों का वो है स्टिल। देखिए चूहा जब छिपता है तो वो बहुत शांत होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, जब उसको खतरे का आभास होता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सिमिलरली इंसान को खतरा महसूस हो रहा है इसीलिए वो भी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। तो दोनों जो सिचुएशंस हैं अगर हम इनको कंपेयर करें, चूहे की हालत और आदमी की हालत, तो दोनों का जो है कॉमन फैक्टर वो है स्टिलनेस। तो यहाँ पर आदमी को चूहे से कंपेयर किया गया है, कॉमन चीज़ है स्टिलनेस, शांत, स्थिरता। और जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है वो है एज डॉट डॉट एज। तो ये यहाँ पे एक कंपैरिजन के शब्द, दो कंपैरिजन के शब्द हैं एज और एज, और एक आदमी की चूहे से तुलना की जा रही है, इसीलिए बहुत बढ़िया उदाहरण है सिमिली का गद्य में। कुछ कॉमन उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सिमिली के। स्लेप्ट लाइक अ लॉग। लॉग लट्ठा आपने देखा ही होगा, लकड़ी का, बिना हिले डुले रहता है, स्टिल रहता है। कोई सो जाए और बिना हिले डुले पड़ा रहे तो उसकी तुलना हम उस लट्ठे से कर सकते हैं। ब्लाइंड एज अ बैट। चमगादड़ की तरह अंधा। दिन में चमगादड़ को कुछ भी नहीं दिखता है, तो यदि कोई ऐसा काम करता है जिसमें आंखें इन्वॉल्व नहीं है, अंधा है, तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बैट जो है मोमेंट मतलब दिन में रहता है अंधा, रात को उसको दिखता है। ऐसे ही कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई चीज़ देख नहीं पाता तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं चमगादड़ से। ऐसे ही लाइट एज अ फेदर, वर्ड्स लाइक चार्म, ओल्ड एज द हिल्स, प्रेटी एज अ पिक्चर, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई तो जग जाहिर है। तो मान लीजिए कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कोई दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो बहुत बुरी तरह से लड़ रही हैं, तो हम कह सकते हैं फाइट, दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइटिंग कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों पार्टीज आपस में कंपेयर की जा रही हैं और लाइक शब्द से की जा रही हैं। स्पार्कल लाइक डायमंड्स, चीक्स लाइक रोजेस, स्वीट एज शुगर। मान लीजिए हम कहते हैं हर वॉइस इज़ एज स्वीट एज शुगर, तो यहाँ चीनी और किसी की आवाज़ की तुलना की जा रही है और मिठास वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में पाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि अगर दो बिल्कुल अलग चीज़ों को जिनमें कुछ कॉमन हो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं लाइक, एज और सो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है वो है सिमिली। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा उदाहरणों के माध्यम से कि सिमिली क्या है। अगला वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो रहेगा मेटाफर के बारे में।